Hi, Sachin. Hi, Hope you're doing good. am I audible? Yes, you're audible. Okay. So, Sachin, can we have your ID card handy so that once the panel joins, right, he will do the verification? Okay, so should I share my screen? Yes, you have to come on video call and you have to just put it in front of the camera, the ID card, whichever you have. Okay, okay. Just wait. Okay. All right. So, kindly just wait for a few minutes. He will join the call. Hmm? Because it's yet to, I mean, the exact time is 4, so he'll be joining exactly by 4. अक्की दरवाजा बंद कर लो अपने कमरे का. Hey, Sachin. Yeah, hi. You're on mute. I think you're on mute yourself. Yes. Am I audible now? Yeah. Perfectly fine. Hey, how are you? I'm fine. Good, Hi, good, good. Rahul. Yes, man. I was just calling you because Oh, I yeah. forgot to reach out. Yeah. Okay, so I'll drop off from the call, Rahul. I'll Sure. take it forward. Bye bye. Sure. No problem.
Yeah, Sachin. So, yep. Good. Yeah, tell me about yourself. A little bit of introduction. Okay. So my name is Sachin Saxena. I did my BTech from ICFI Tech Dehradun. Then I did my MTech from DIT Dehradun again in computer science and engineering, and having experience of data science and machine learning and statistics also, and basics Power BI, advanced SQL, Python, and Tableau, and other tools also. Having means computer vision experience, have worked in two edutech company. First is Edinoc. Edinoc is a Bangalore-based company where I had recorded 15 hours machine learning data science video. They will upload these videos as a course on their portal. And then I have worked for Codingle. It's again Bangalore-based company. There I had to teach several candidates from USA, UK, from EU also, and from northeast part of India, South India also, and having courses of data science, machine learning, Bootstrap, Python, and HTML, basic Java also. And currently, I am taking three candidates from USA, means two candidates from USA, one is from Bangalore, teaching advanced SQL and Python. Yeah. Okay. Great. And why you want to move to a corporate job? You have been a trainer, right? If I'm I, not wrong. And it's yes, trainer okay. at different engineering colleges also, like Yeah. in Yeah. Correct. Dehradun. Yes. Correct. But why you want to move? And yeah, why you So want to move now? To be very frank, in I don't know means in education department, we don't have very much hands-on practice kind of job. Means coding questions, coding oriented works are not Mm-hmm. here. We are just teaching theory, monotonous work, preparing question papers, preparing I know. yes. No, I'm aware of the kind of work happens in colleges, but I don't. So why this interest now is what I'm trying to understand. You have Uh, been an you've been a trainer for quite some time now, right? yes. Yeah. So why now? What is causing this? Me Yeah. earlier, I thought that I would be fine with this teaching profession and having very fun life in as a professor, assistant professor, and will get very handsome salary packages. But the moment I'm growing in this field, and as far as the salary package is concerned, so not very much growth here. I don't Got it. see. Got it. So Even for Greater growth. Noida, my current location is Greater Noida. Even Mhm. sometimes I am planning to move Calcutta University. So they are giving 10 LPA for very means senior candidates. Yeah, yeah, yeah. Got it. I know, no, you, yeah, I do understand that point. So now, what have you done to make yourself ready for the corporate? Because you know the kind of work happens in corporate is totally different, right? And you have been out, like out for so long, right? So what have you been doing? Preparing myself for for more and more coding practice, like taking data science, machine learning, means Python hands-on, advanced SQL, visualization course, how to collaboration with means Power BI and Python, how to classify different data set, how to upload these data set to Azure. Right now, I am taking classes of means AWS, where I am teaching right now. I am the mentor over there. Means AWS have provided the credentials to all our faculty members, and we are learning AWS, concurrently teaching AWS to our students. So how long do you code every day? Around 1 or 2 hours. And what do you code most? Um, Previously, I used to teach Python. Right now, I'm Okay. teaching SQL, advanced SQL, No, teaching means teaching or coding? coding. Coding. But as far as Okay. teaching is concerned, I am having deep learning and introduction of soft computing. These two subjects I'm going to preparing for next semester. Okay. So deep learning. Okay. So deep learning means neural nets, right?
They had in syllabus deep means neural network and sometimes LSTM also and means another one more algo is there. So I Okay, will I get don't more know. time, see, four to Yeah, five don't know months. much about. Yeah, don't know much about that. But I yeah, of course I've been reading about it. And so in neural nets, right? So in neural nets, right? So can you explain me how these SGD work? Stochastic gradient descent. Yes. So why we are using stochastic gradient descent to find out the optimal solution or optimal means the value of weights to which I have assigned to my neurons or the means data pass from one neuron to another neuron. So these weights W1, W2, W3 must have tuned on certain parameters. So I'll take the derivative, partial derivative. Why I am taking partial derivative? Because I'm having other variables also, like with respect to x1, x2, with respect to bias functions also. So for keeping one variable in a movement rest as a constant, I am taking partial derivative. Now it's having graph. What kind of graph? It's having, it might have decreasing graph, it might have increasing graph. And line equation says once you calculate the slope of any line, dy over dx, that's the slope of the line. If I get the double differentiation of this partial differentiation, if it is zero, then I'm moving towards the maximum point. If it is means if it is positive, I'm moving towards the upward direction. If it is negative, which means my line is having slope towards the negative direction. So this differentiation or double differentiation in the gradient descent will tends towards to the minimum error. So on the basis of minimum error, error in between the prediction value and the actual output. So actual output and the prediction value are having minimum error on what kind of set of weights. So that's the set of certain weights. I'll tune my weights in the second epoch on the basis of gradient descent. If it again the far from my certain value, I'll tune my weights again. So after 100 epochs or let's say 20 epochs, if I'm having output nearby my set goal, I'll stop my epoch. That's called early stopping. So this is the called means graded descent. For the certain learning rate, I'll keep learning rate 0.001 so that I cannot jump over large data. If I keep more learning rate, I'll move towards large data set, might have the wrong correction. If I'll keep very small step, tiny steps over there. So mathematics behind this concept to move towards the less error. Why stochastic? What is the meaning of stochastic? Why is this? Stochastic means like very tiny, very with respect to learning rate. Sure, I had read somewhere, I can't recall. that's fine. No big issue. That's fine. That's fine. That's fine. Okay, so which library you use for neural nets? TensorFlow, PyTorch, or what? As of now, TensorFlow, but I'm moving to PyTorch also. Fine. But as of means in PyTorch, we can write our means without any API, because in TensorFlow also we can write the code for certain means in ResNet 50. If you want to write ResNet 50 code, if you want to write means other transfer learning code, we can write in TensorFlow using sessions and so on. But eventually we will have to use Keras API. But in terms of PyTorch, we can write means a very means very concise code over there for different transfer learning also. Another part for transfer PyTorch is benefit is like we can upload this code and we can tune this code with respect to cloud also. So whether it is AWS or whether it is means today morning I was seeing the cloud which is having like SageMaker is the
platform to run uh, uh, Python code on AWS. It's a very familiar with PyCharm. So PyCharm is more familiar with image dataset. It's a familiar with transfer learning like GGG16. We can have more computer vision means projects like this one YOLO 7, YOLO 6, YOLO version 5, and so on. So PyTorch is more familiar to this. So I am having right now I'm having target to create a new algo. So it's a very tedious task to write purely in TensorFlow because it's using session and all. Without Keras API, it's a very tedious task to write code in TensorFlow. Eventually, I will have to use means Keras API from keras.io official website of Keras. But in PyTorch, I can have more lines of code, more neurons. I can create my layers. I can create my weights. I can create my means error function, whether SGD or another minimum error function there. Okay. All right. So that's fine. So are you so you don't have any experience of any corporate, right? So are you okay to come and join us as a fresher? Yes, Okay. Okay. What's your current CTC? it's a negotiable. Means if I'll get less CTC, I would be means acceptable because I eventually I want to switch to IT company. So, No, I but know, I know, I know, I know. as a I'm not trying to squeeze you. I'm just trying to understand what is your current CTC. it's a 7.5 LPA. Okay. And what is the expectation from corporate? If it is same or more than 7.5 LPA, that would be fine. Yeah, yeah, yeah. The number of experience in education? How long? 12, 12 years. Yeah, yeah. I remember you had 10 plus. Okay. Yeah. Okay. Fine. And other than the machine learning or deep learning, have you also done anything on MLOps? ML Ops, you are asking? Mm. Uh, Yeah, MLOps. no, means I'm learning that part. So you're Not learning yet. MLOps. What are you learning in MLOps? Means like SQL means that's the means next part of my AWS and all. So I'll be learning not as of now. Yeah. So, but are you aware of what is MLOps? Yes, it's a machine learning operations, how to perform ETL, how to take data from one point to another point, how to perform means how to uh, predict the certain data and get to the front end and means how to take into the operations part. Those are taking care of visualizations, taking care of deployment, taking care of different aspects. How is your typical day? Like, how long do you work in a day? Like in your college, really, like working, um, not like doing research, but just working every day. Like teaching hours. Teaching plus then maybe like corrections, then maybe like preparing assessments, preparing questions. Those are the real work. So how long do you do that in a day? They eat completely 9 hours. Means like Okay. early in the morning 8:30 till 5 p.m. because where I am teaching, large candidates are there, like more than 1,000, 2,000 candidates are there. So if I am having means around 200 candidates and if I am having bunch of copies, so it will take 3 days or 4 days to check all these copies done. So I once it all the copies done, I'll have to upload these marks. Then again, you are supposed to write the research papers, and we are supposed to get patent for our means university. And patent for patent, we will have to take the courses. And nowadays, we are having aspect to complete AWS courses as early as possible. So it's a two double-ended swords, though they are taking pressures on us, but eventually we are learning. So if I'm learning So AWS courses, yeah, so that would be what are you learning in AWS it, exactly? exactly. They are having means practitioner. They are expecting us to qualify practitioner
certification, but we are moving towards machine learning, that is SageMaker, and then we will move to data analytics part. And before that, we had completed how to create means instances, how to create the IAM, how to create different sections, how to done the labs, and means Amazon have provided us their own portal, their own credentials, and we just log in using these credentials and perform their labs. And though they are very simple for candidates, for us they are very simple. But as far as TensorFlow and machine learning, computer vision projects are concerned, they have means in SageMaker they have their own means practice sessions, means their own files, and on the I know. different means Mm, yes, mm, SageMaker. Currently I'm mm. learning SageMaker. Correct, correct, correct. Do you maintain a GitHub repository of projects you have done? Yes, Is it? I think it's there in your resume also. yes. I remember seeing it actually one second. Okay, Sachin, I am feeling good talking to you. It's just that see my only my point. Okay, I want to be very frank. Okay, uh, the reason is the corporate works very differently, right? I mean, your 12 years in education, of course you have learned, and of course you have learned many things, and nobody's taking away that, right? But the grind at which the corporate or the IT works is a different, right? I know. I mean, it's every work. Even every work is like important, and every work requires a lot of effort. It's just different flavor is what I'm trying to say, right? So now that you have made your mind, but the only thing is I'm not convinced that whether you will stay in IT. So what I've seen is people who have not been in IT and trying to move into IT, what happens is, yeah, and because they're very comfortable in the previous job. So what happens is, I mean, it's a hypothetical situation, but seen it happening before. That you coming in, okay, let's say you're coming in, getting some projects, the pressure mounts up, and then you feel that okay, I was okay at my job in college, and I should be going there. Okay, Okay. but I want to add here. I was Mhm. not in the comfortable zone while in my teaching. I was taking freelancing projects also, like Mhm. projects from USA for LSTM, deep learning, computer vision, and So where completed. are those projects? Those projects are personal, means they have assigned a teachers on. They have means some few videos are there. I can you can see on my YouTube video portal, Yeah, but and yes. what was like, what was the challenge on that? What was the challenge Yes. you So they faced? they had their assignment, means they had their deep learning codes, and deep learning codes were having certain means angiographic data, and on the basis of this data they have code missing codes was there, and we will have to complete that code and get the certain accuracy. So once this accuracy is going to met, that assignment is No, complete. I know. Yes. I do understand that. What was the challenge you faced? Like, Okay. what was I so? I What was the faced challenge? What was I not faced like accuracy and all, but yes. yeah. Go ahead, At please. Yeah, that please time, come. I was not very good in coding. It was not good in Python, not good in Matplotlib and PyCharm and all these Yeah, computer but vision tools. there, but the see the point, Sachin. So okay, so you face some technical issues. That's fine. I'm not Hmm. really. What I'm trying to say is, how is your attitude? Yeah. If suppose you had faced some issue, okay. If it was something which you couldn't Rude. have solved, what would you have You done? You you would have left the project, right? You no would have left the project. No. no. I try my best if they Ah, ah. because we are only two parties. So if I'm not done that project, someone else will do that. No, that's what I'm saying. Yeah, I know that, and that's what Yes. I'm trying to say. That Hmm. so what will happen? You will leave that project and then go back to your old because you have a cushion, you have a blanket, and you will just go back to your job where you're teaching, you're comfortable with, right? That's what I'm saying. That's what I'm trying to understand. How do I assess you to to a point where our company feels comfortable that okay, this guy gonna be with us. Okay, one thing is, yeah, your talent and your skills, that is anyhow we are going to like evaluate further. Okay, but that's fine. And I do assume that you have done some good work. Okay, but 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 I second point think is like, teaching yeah, but I think teaching final year and third year candidates
those are ready to move to IT means IT company, and most of them are already placed in IT company, in farm company, and these other Amazon and all. So they are Yeah. also having the same kind of query. Sometimes very tricky. We Mm. will have to look around and get prepared in the next Yeah. class. I'm not. I'm. My point is it's still. I think you think that I'm. You think I'm worried about you not being able to solve a problem? No, no, no. I am not worried about that. My worry is you being able to solve the problem in the time frame which real projects work. Okay. Okay, that is the point I'm trying. Of course, if I give you a problem statement and I ask you to do it in 1 month, you will be able to do it because you're a researcher, right? You know how to research. You find I know how you find the problems, solution, and then fix the problem. I know you can do that. But can you do that in the time frame which usually the projects run, like let's say a week, let's say 2 days, let's say 1 day, let's say next 2 hours? Okay, that is where I was. I'm a little struggling to evaluate you. I'm not saying you can't do or can do. It's just that I am not able to find a way to evaluate that whether that is Yes, doable or I not. got your Okay. point. I Yeah, got yeah. your point. You may So very well be able to do it. by the grace of God, not today, not in this year, maybe in upcoming year, if you give the opportunity to Yeah, work I know, over I here know, I know, by I know. support of all you guys, so might Yeah. be in upcoming days I will be might perfect. Yeah. No, no, no. Wait. I mean, it's not, and I'm still saying that it's not your fault. You do have a lot of good credentials behind you. Okay. It's just that I'm not able to compare an apple and an orange. Okay. It's my lacking and not your. Okay. So what I will do is I will set up another call with you. Okay. Hmm. See, today's call, I kind of understand that you have done some work, good work. Okay. Definitely, you have knowledge and skills which we can work with. Okay. The second question is if I can evaluate you whether you will do decent in IT or not is second thing. So for that, I'll probably need a little bit of help of my team. Okay, so what I'll do, Sachin, is I'll set up another call. I'll ask Asmin to set up another call with you. That call will have two things. Okay, one is a normal discussion like what we had today, and second part will be the technical interview. That'll be more Technical on towards Python. you tell me which language you're comfortable with. Okay. I will put it in that language. Is Okay. it Python is okay for you? SQL. Can I mix like both? Because I think that will give you also an opportunity to like if suppose SQL is not working out, you can always go Okay. back to Python and do Python also. Yes. Right? Yes. Correct? Right. So let me do that. It might take some time, like a week, okay, because I'm also like a little busy. So don't expect anything like by tomorrow. I'll expect something in a week time. But definitely that second round I'll get you there. Okay. And also I will also check with my team how do I like what's the best way to evaluate you for us. Okay. And Okay. we okay. So that is what we will do. Is that okay with you? Do you think it is Yes. fair? Yes. Fair. Got it. Okay. Perfect then. So then it was nice talking to you, man. Okay. And just keep waiting for a week or 10 days. You will receive. You should receive another round. Okay, with Right. us. Bye. Okay. Have a nice day. And in the meantime, keep coding in SQL and Python both. Hmm. Okay. Sure. Okay. Yeah. Bye. All right. Thank you, man. But tell me one thing. Very quickly. Of course, I mean, I know that your intention to join is 100%, right? And you are you're currently based out of where? No, based in Bareilly, Bareilly में. Bareilly, Uttar अच्छा Pradesh. यूपी पता है मुझे हाँ आई एम अवेयर मैं जयपुर से हूँ वैसे तो हाँ Okay. हाँ aware of that okay But current ठीक है location is Greater Noida. हाँ अभी तो ग्रेटर नोएडा एनसीआर में हूँ ना ठीक है Ah, ठीक है BNC. ठीक है ठीक है ठीक है यार कोई दिक्कत नहीं मस्त है ना Hmm. ठीक है तो मैं बात करता हूँ है ना Right. और क्या प्रैक्टिस करते रहो ठीक है देखते ठीक. हैं ऑलराइट Okay. सुपर यार Bye. वेरी नाइस ऑलराइट
Drop down list the page setup that works. Click on the monitor. Not selected. In margin section, set the top, bottom, left, and right margin in their respective boxes. Click on the paper size. You can specify a size for the paper on which you want to print the word. So, this one is a paper size. This is the size of a paper. Paper, paste cover, more document text. It's called more paper size. You view other paper sizes option in the folder. Click on the more sizes, selecting the selecting section for columns.
researching the newspaper and vaccine more quality of life. Review other quality. We have to collect how to view
क्या क्या पढ़ लिया है? क्या पढ़ा है? ये पढ़ लिया? लो। हाँ, मैं पेज मार्जिन बता देती हूँ। तो क्या होता है पेज मार्जिन? मैंने बता दिया था पेज क्या होता है पेज मार्जिन फिर? from the blank space between the page is and the text. Space means the part of space. What is the custom margin? In the custom margin, we can select the space. How much space can we get? क्यों पढ़ रहा है? कौन कर रहा है? यूजलेस है सभी का कोई काम नहीं है। कट ही नहीं रहा है। अभी तो खा रही है, कट ही नहीं रहा है। फिर ऐसे फाड़ रहा हूँ। दो ही फाड़े थे। फाड़ दिया। Yes, custom margin क्या होता है? हाँ, हाँ we can add पेज का मार्जिन set. अपने हिसाब से सेट कर। वही तो बोल रहा मैंने। What is page orientation? वही पढ़ा। उसके आगे
इसको पढ़ना भूल गया था, मैंने इसको पढ़ा था, उसके आगे वाला पढ़ा था, ये वाला नहीं पढ़ा था। अब मैं पढ़ाई लगाता हूँ तुम्हारी। मैंने हाँ, ये नहीं पेज पढ़ा था। ओरिएंटेशन क्या होता है? वही जो नहीं पढ़ा था मैंने, हाँ? वही जो नहीं पढ़ा था मैंने। पेज का लेआउट यानी कि पीछे का बैकग्राउंड कैसा हो। पेज में वो एक होता है, तुमने देखा होगा वाटर मार्क लगा देते हैं। तो बॉटम मार्क, वाटर मार्क जैसे कि कॉपी है ये, तो इसमें तुम्हारे स्कूल का नेम लिखा हुआ आ रहा हो हल्का सा, बहुत लाइट बीचों बीच में, वो वाटर मार्क कहलाता है। होता है तो वो पेज ओरिएंटेशन होता है कि आप अपने हिसाब से पेज को सेलेक्ट कर सकते हो। सेट कर। व्हाट इज द पेपर साइज? And we can select the size of the paper. According, we can select the size of the paper according to our text. How much text? पेपर साइज, हाँ टेक्स्ट के, लेकिन नॉर्मल According पेपर साइज क्या होता है? I mean for सेटिंग टेक्स्ट इन मल्टी कॉलम, ये तो पता ही होगा। yes ma'am. है ना, हम सेटिंग कर सकते हैं। मोर कॉलम ऑप्शन, More column. And we can select columns like 1, 2, 3. If they are also left and right column. वक्त वैसे मुझे नहीं जरूरत है, इतना कम नहीं। किसने? आते आएगा वो? तुम लोग भी तो जा रही। होमवर्क तो कल भी दे दिया था उसको। तुम होमवर्क क्यों भेजे, वो आता नहीं। क्या? सर से यही भेजती होंगी, आप उसका होमवर्क करके दे दो। सही है। मेरी साइंस की एक नोटबुक मैम खत्म हो गई? साइंस की नोटबुक। अच्छा, मैं समझी मैम खत्म हो गई। आप कहाँ से आ रहे हैं? आप कहाँ से आ रही नोट टू डन। मैं ऐसे नहीं। हाँ मैं क्या क्यों कर रहे हो? मजा आ रहा है। इरिटेटिंग लग रहा है मेरे को। अब ये देखो क्या हो रहा है, मैंने पेंसिल फेंक के मारी, देखो क्या हो गया। फिर हो गया। देखिए पर्पल सर्कल से बहुत बदतमीज हो जाता है, बहुत ज्यादा। देखो वो अपने आप गिरती है। मैं मछली से करता हूँ, चलो। वो अपने आप गिरती है। हाइपरलिंक तो क्या होता है? जल्दी बताओ जल्दी। व्हाट? हाइपरलिंक क्या होता है? मैंने मोर कॉलम तक ही पढ़ा था। हैं? मैंने मोर कॉलम तक ही पढ़ा था, उसके आगे नहीं पढ़ा था। हाइपरलिंक क्या होता है? तुमने नेट पे सर्च करते हो, गेम वेम देखते हो, कुछ देखते हो?
फोन में देखते हो ना, तो फोन में एक वो आता है लिंक, मतलब कि पर्पल कलर का या ब्लू कलर का एक लिंक आता है, उस टेक्स्ट आता है, जब हम उस पर क्लिक करते हैं तो क्या होता है, दूसरे पेज पे पहुंच जाते हैं हम, या मैम एक लिंक भेजती हैं, ठीक है, तो क्या होता है उस पर अंडरलाइन टाइप की होती है, तो वो हाइपर लिंक कहलाता है। ऐसा लिंक जिस पे क्लिक करने पर हम क्या करते हैं, दूसरे पेज पे पहुंच जाते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, हाइपरलिंक। हाइपर। आज हमने इस लिंक क्रिएट किया था, हाइपरलिंक। मैम ने, चलो तो मैम देखा 80 मार्क्स मिल गया। देयर आर डैश पेज मार्जिन इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में कितने पेज मार्जिन है? 1 lakh। मैम 4। मैम 4। मैम टॉप बॉटम राइट लेफ्ट। इन डैश ओरिएंटेशन पेज विथ इज मोर देन पेज हाइट। विथ मैम लैंडस्केप। A hyperlink can be created to which of the following: a website, a file in current folder, a file in other folder, all of these. A separate block of text can be created using which of the following: header, footer, hyperlink, text box. समझ में आया सर? ये तुमने पढ़ा ही नहीं है, क्या ही सब नहीं आएगा। चलो इंग्लिश निकालो, अभी तो टाइम है 15 मिनट है, 5 मिनट पहले आएगा। तो क्या होगा? मैम यहाँ पर कुछ तो हो गया है, कुछ हो गया है। ग्रामर में क्या कब आया? हमको कुछ नहीं कराया। कहाँ तक आया था? कहाँ पे? टीवी 2 में? टीवी 2 में कितना आया था? रुट्टी को रखे हैं। फिर नाउन और एडजेक्टिव। और मैम वो भी तो आया था लेटर। लेटर, लेटर लिख के दिखा दे हाथ में मुझे जल्दी से। मम्मी से शिकायत कौन क्या है? वो दूसरा वाला आया था अंदर। तू वही वाला लिख के दिखा दे, दूसरा कॉपी वाला। में? हाँ वो वाला है? जो कॉपी में वो वाला लिखा हाँ था। वो लिख दे, वो लिखा तो था मैंने, वो लिखा तो था। दोबारा लिख दे, दोबारा लिखने में क्या दिक्कत हो रही है? लिख दे, जल्दी से लिख, लिख दे और फिर जा रिवाइज करो। रिवाइज के नाम पे याद ही करते हो तुम लोग। मैं वो नहीं करता, मैंने वो लोग को कर दूंगा। हाँ टाइमर लगाओ, 2 मिनट से 2 मिनट में हो जाएगा। सुना? ठीक, अब 2 मिनट का टाइमर लगाओ, लगा दिया। या फिर आप 120 तक काउंट करो। खा लिया बेटा? क्या खाया? और बस मम्मा जैस्मिन आपने ये क्यों छुटा दिया? मैं नेवर खाएंगे ये तो अंकल एंड आंटी तो फिर से बन जाएगा। मैंने नहीं खाया, हम फिर से पापा है ना। इट इज ग्रेट बेवकूफ है ना पापा। क्या पापा ने हमसे ग्रेट मम्मा ये छुटा है तो क्यों नहीं होंगे? है पापा। They have been taking good care of me. You have already been to the zoo and the museum, and when we usually go to the park and play football. अरे रुक जा तू, There I wish I can stay here for few more days. I miss you both of I miss both of you. Would be coming back soon. Uncle and aunt are taking good care of me. This is too late. और भाई कहा क्या हाल चाल तुम्हारे? पेट का कैसा है?
है स्कूल नहीं गया था आज भी? बैठ जाओ। तेरे स्टोन कहाँ अटक गई है? निकाल दे उसे। ला मैं निकाल दूँ चाकू से। इधर आ गया है चाकू के पास। मैं निकाल दूँ चाकू से। मैम वो पत्थर रियल वाला थोड़ी ना है। फिर कौन सा है? मैम वो जो जितने भी वो होते हैं ना, जो कचरा होता है उससे वो बन जाता है। अब आप निकाल लोगे वो फिर से बन जाएगा, आप कितनी बार निकालोगे और वो रियल में निकलेगा भी नहीं ऐसे। नहीं तो बन जाएगा दोबारा। हाँ बन जाता है। पत्थरी तो तू कच्चा मत खा, उला हुआ खा। वो जो बहुत पुराना खाना होता है ना तो वो अपने टुकड़े छोड़ता रहता है, प्रोटीन्स निकाल लेता है, सब कुछ निकाल लेता है, उसके बाद जो वो टुकड़े बचता है ना वो कचरा होता है और वो जम जाता है तो तेरे में क्यों हो रहा है? मम्मी मेरे शुरुआत से ही मेरे चलता हुआ है। पहले मेरी नानी जी को भी था, मेरी मम्मी को भी था और मेरे भैया को भी था, पापा को भी था, तो मेरे को भी हो गई। ये तू चल। कल छुट्टी है? नहीं है? मजे आ गए 3 दिन की छुट्टी? नहीं है 3 दिन क्यों? मेरे तो रहते 2 दिन, फ्राइडे सैटरडे संडे। और तेरी सैटरडे की नहीं है? आई थिंक दवाई खा के मैं सो जाता है और मेरे को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, मैं अभी उठा हूँ बस। दर्द हो रहा था इसलिए मैंने दवाई खा के सुला दिया। कोई नहीं, कल एक काम करना, कल मॉर्निंग में पढ़ जाना। तू भी फ्री मैं भी फ्री। कल तो वो भी है यहाँ नीचे फंक्शन। आप सुना जाओगे हाँ दूसरी तो जाएगा। जन्माष्टमी का 8:30 तक जाएगा। जाएगी ये बनी कुछ नहीं है बट हाँ जाएगी। चलेगी क्या नहीं अब तुम्हारे यहाँ से फिर पोशाक लेनी पड़ती है, फिर पैसे देने पड़ते हैं। मेरे को सिर्फ एक चीज अच्छी नहीं लगती, जब कोई प्रोग्राम होता है तो पैसे क्यों लेने पैसे कितने हर लेने चीज हैं? में पैसे लेने होते हैं। कोई मतलब सरकार का भी कोई होगा ना तो उसके अंदर आप पैसे लेंगे कि सर नहीं कोई प्रोग्राम है तो आप पैसे दोगे तब भी आप कहाँ पे? ये नीचे आपको अगर पार्टिसिपेट करना है ना तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। आज तो नहीं था, पैसे देने पड़ेंगे बट मैं एक बात कह रही हूँ कि पिछली बार भी उस दिन भी जब मैं नीचे पार्टिसिपेट के लिए गया था तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप पहले पैसे लेके आओ उसके बाद ही हम आपको लेंगे। मतलब मत करो। लर्न कर, लिख कर और जा। होमवर्क आया है भाई साहब बहुत सारा, कितना कर लिया है? क्यों भाई? हिस्ट्री में भेजा है मम्मी ने, कर लिया क्या? क्या हिस्ट्री में होमवर्क कंप्लीट कर लिया? हिस्ट्री का वो चैप्टर नंबर 4 द अर्लीस्ट सिटीज। आया नहीं है, वो सिविक्स है। हिस्ट्री लिखा है इसमें तो सब्जेक्ट। हिस्ट्री मैम सिविक्स करा रही है, हिस्ट्री कैसे सकते हैं। भैया ये तो मुझे नहीं पता, लिखा जो है वो मैं बता रही हूँ। मैम करा और सिविक्स नहीं है मैम पहली बार तुम्हारा हिस्ट्री क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर 4 हिस्ट्री वो सिविक्स होगा क्योंकि मम्मी ने मेरे को एंड civics बोला। मैथमेटिक्स 4.5 क्वेश्चन नंबर 2। हाँ वो मेरे स्कूल में ही कर लिया। पक्का? तो सिविक्स निकाल फिर, हिस्ट्री और मैम सिविक्स में है क्या, सिविक्स सिविक्स होगा, हिस्ट्री वो साइंस होगा और हिस्ट्री नहीं होता। ये हिस्ट्री में मैम ने आज कोई काम ही नहीं करवाया तो उसको ले काम भैया देंगे। देख मैं झूठ थोड़ी बोल रही हूँ। उसको लग रहा है झूठ बोलते हैं। ले मैम ये हिस्ट्री इन लोगों ने गलत लिख दिया, ये सिविक्स का है। सिविक्स की बुक कॉपी निकालो, करो लाया ही ना होगा कॉपी। मैम ये वैसे भी मैम ने स्कूल के अंदर कराया है क्लास लेके। और टेस्ट है ट्यूसडे को मैथ का। 3.6 एंड 3.7 का वो तो आप करवा ही चुके हो मेरे को। LCM SCF तो मेरे को रटा पड़ा है।
बहुत इजी है, बच्चा भी कर सकता है। ये नहीं कर रही बच्चे करते हैं तभी तो गलती कर देते हो तुम लोग। मैम, मैंने एलसीएम में सिर्फ मैं आज तक गलती नहीं करी। तभी तो तुम जब लोग तक कर, करते हो। आपने जितनी बार मेरे को क्वेश्चन दिया है एलसीएम का, मैंने एक बार गलती नहीं करी। वो जस्ट लर्न कर, लिख कर और फिर जा। बच्चे बैठा रहे, मुझे बात सुन लो, सुनने में मजे नहीं आते। उसमें ऐसा टाइम लगेगा, वो की वेस्ट है। इसको ऐसे लाइट करो, बैठ कर फोन पे बैठ जाओ ना। क्या लाए हो फिर निकालो भाई साहब, क्या क्या मैम लाए साइंस एंड मैथ्स। हो? एसएसटी नहीं लाए हो? और मैंने टेस्ट करी थी ज्योग्राफी का। इसमें गई जॉब। कल तो तुम्हारी तबीयत सही नहीं थी, ऐसे कैसे काम चलेगा? आपने टेस्ट कहाँ लिखी था? देख लो, कॉपी में देख लो। आपने लर्न लिखा था, टेस्ट नहीं लिखा था। टेस्ट तो सैटरडे में लिखा था आपने। सैटरडे को किस चीज का है? साइंस का है, एक चैप्टर का है शायद। हाँ कंप्लीट। मैं गलत बात है, एक चैप्टर का लेती मैं। ओ भाई, वो भी इंग्लिश के। मेरा वो एक ही चैप्टर 2 चैप्टर के बराबर है, ठीक है? मेरा एक चैप्टर हो या 3 चैप्टर हो, मेरा इंग्लिश का चैप्टर बिल्कुल जाओ। वो बिल्कुल अच्छे है। इंग्लिश रीडर, इंग्लिश रीडर से होता क्या है? उसका यूज क्या है? इंग्लिश लिटरेचर स्पोकन के लिए होता है, और ग्रामर जो जितने भी वर्ब्स, वो तो पता है, ग्रामर का तो यूज है। मेरे को जो तुम बोलते हो वो लिटरेचर होता है, जो तुम लिखते हो वो ग्रामर होता है, ठीक है? अरे यार, निकालो अपना अपना सामान। हम क्या निकालूं? चलो, हम कहाँ रखूं सामान? तो अपने दोनों कॉपी किताबें रखते। ला भाई, साइंस निकालो फिर। रख दो कब लैपटॉप की पर। आप हटा दो ना, आप हटा दो ना। मैं नहीं हटा सकती, मना करते हैं। आप हटा दो। आपको मना करते हैं, मुझको नहीं करते वर्ड मना करते। किसी को अनुमति नहीं है। किसी को भी उसके अलावा तो सबकी कौन है? कितना इजी है। स्लीप पे इसको इसके शटर ऑफ करो तो हमें इजी। ये क्या हो रहा है? कुछ भी हो रहा है? चलता रहता है तेरे मतलब का नहीं है, तुम्हारे मतलब का नहीं। मेरे मतलब भाई, का लर्न कर ले। हाँ, अभी आ रही होगी मम्मी, मैं वो नहीं अनायशा को लेके आएंगी ना। चार मैम पहले साइंस या मैथ्स? साइंस निकालो पहले। हैं? बुक भी लाओ। और नोटबुक है वो? दोनों दे दो। मैम आपको टेस्ट में थे ना? बातें 30 तक प्रिपरेशन कर लो सारी, 31 तक। हो सकता है कि तुम्हें पेपर जो है सर के अंडर देने पड़े, वो तो मेरे को पता है, और क्योंकि अदरवाइज आपने मम्मी को बता दिया था। हाँ, और हो भी सकता है अगर तुम्हारी मम्मी चाहे तो तुम दूसरा ट्यूशन, मैं ये नहीं कह रही हमेशा के लिए, अगर मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं हो मैं बात कर लूंगी मम्मी वैसे से। तो मैं खुद ही कर दूंगा, दिल्ली में पढ़ना स्टार्ट हो चुका हूँ। हाँ, अगर चाहे तो वो दूसरा ट्यूशन भी लगा सकती हैं या दूसरी टीचर से, क्योंकि मेरी जो पेपर है वो 10 दिन छुट्टियाँ होती हैं मेरी तरफ से। और अगर सर नहीं, तो होंगे, और सर तो अगर पढ़ाएंगे। नहीं सर, मैं सर से कर लूंगा फिर। हाँ तो बस दूसरी जगह जाना ही जो चल रहा है वही बढ़िया। सर तुम्हारी अपनी गली सबसे बड़ी। सबसे अच्छी बात है, ये मेरे और तुम्हारे बीच की बात है ना, इस चीज को मम्मी से डिस्क्लोज करना। मम्मी को तो पहले से पता है। एक चीज मैं जो अभी बोलने जा रही हूँ इसको ना मम्मी से डिस्क्लोज करना ना सर से। आ रहे हैं जस्ट कमेंट कि 31 तक हम लोग पूरा रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि वो हमारे पास आ चुका है सिलेबस, हमें पता है क्या क्या नहीं है। ठीक है, अभी 31 में भी 10 डेज बाकी है। 10 डेज बहुत होते हैं प्रिपरेशन करने के, तो 10 डेज में हाँ 10 डेज में प्रिपरेशन करके रखो, हमारी पूरी प्रिपरेशन रहेगी। फिर क्या काम रहेगा तुम्हारा, सर को बस लिख के दिखाया देना। मैम वैसे भी जीके बस। जीके तो कंप्लीट हो चुका है। कंप्यूटर में
जो हम 3 चैप्टर कंप्यूटर के 2 चैप्टर आ रहे हैं और एक प्रैक्टिकल करना है। तो वो 2 चैप्टर तो मेरे को आता है, प्रैक्टिकल में मेरे को एक दो चीज देखनी है और देख लूंगा वो कर दो। उसमें पावर पॉइंट लेना चलता है। ये एचपी है, एचपी डेल नहीं होता और डेल पहली बात ये फायरफॉक्स है। हाँ इंटरनेट ठीक है, तो ये फिर वही बात पक्की वाली हाँ हमने कि वाईफाई 4 लगाया तक तो मैं हूँ, 4 तक तो 5 हम 4 तक हो। आपको फिर तो 6 का एग्जाम ही है पहला, तो फिर तो अरे यार मेरे को तुम्हारे एग्जाम की टेंशन हो रही है। तुम्हारे एग्जाम कब तक है? मैम आई थिंक 23 तक है शायद। मैम दो एग्जाम के बीच में पहले एक एक की छुट्टी है, फिर तीसरे एग्जाम के बाद दो दो दिन की छुट्टी है। क्या क्या ये तुम क्या बोलना चाह रहे हो? आज तुम मेरे को बताओ क्या कुछ बोला मैं तुमसे? 21 तक है तुम्हारा एग्जाम। नहीं पहला एग्जाम तो बिल्कुल लग रहा है, मैम पहले की तो एग्जाम बेकार जीके है। कंप्यूटर जो कि मेरे को रटे पड़ा है। मैंने चलो मम्मी तो यही बोल रहा था कंप्यूटर तो मेरे को इतने अच्छे से आता है, प्रैक्टिकल में मैं क्या नहीं बना सकता। मैंने पूरी लिस्ट बना रखी है। मैंने एक पूरी हाँ आपको पता है मैंने एक पूरी वेबसाइट बना रखी है। फिर पावरपॉइंट क्या चीज है, बच्चे वाली चीजें करवा रही हूँ। हाँ भाई कौन सा चैप्टर आ रहा है इसमें? मैम आई थिंक कंपोनेंट्स ऑफ फूड, सेपरेशन ऑफ मैंने सब्सटेंसेस। टेस्ट में कौन सा दिया है देखने जरा। आप तो 7 दिया है, गेटिंग टू नो प्लांट्स। साइंस में 7th दिया है मैंने। गेटिंग टू नो प्लांट्स। मैम वो जो डायग्राम था ना उसको मैम ने पता नहीं 6.3 लिख दिया था, जो कि मैम को लिखना था 8.3। मैम ने 6.3 लिख के भेज दिया। मैं इसको सोचूंगी कहीं ये तो पे कराया नहीं है। मैं सेव करना पड़ेगा तुम्हारे सिलेबस को। हाँ अपने पेंसिल दे दो मुझे कोई। हाँ अपने नंबर पे पिन कर सकते हो, अपने नंबर पे व्हाट्सएप में पिन कर सकते हो, तो आप उसको पिन करके उसके ऊपर सिलेबस भेज दो इजी। They have been taken good care of me. They have already लेजर been देना। unexpected have already been on the new and ये पापा को बोला, पापा से बोला है ना आप कल पापा का लैपटॉप खराब कर रहे हैं। हाँ मैंने सर का लैपटॉप खराब कर दिया था। 7th 8 चैप्टर पढ़ा रही हूँ मैं, बॉडी मूवमेंट्स। मैम ने करवा दिया है अभी? नहीं कहाँ है? मैम अभी सिर्फ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन करवाया है और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन अभी 2-3 नहीं करवाया। ये देखो पीछे देखो दिख गया क्या बोलती है, दिमाग की दही कर देती है अपना फालतू में खड़े खड़े। यूजुअली वो लोग कहाँ हो रखे हैं?